Hello. Good evening. So everybody is doing fine. So do join. Good evening. So hope you are doing fine, everybody. Saturday ना तो जी समस्त जाइथे बुला बुली करे पे जाइथे ना देयर इज नो मूवी भी किसी आसे नहीं कौन देखिबो कोन वेट मिनट गुड इवनिंग everyone. So how is your day is going on? So let me start with the slide first. रही गला तो तुमर सब डीएनए प्रिपरेशन केबे केमी चलची समस्त हमें तमें डिमांड करो केबे टेस्ट सीरीज दरकार है ना तुम्हें पढ़ा पढ़ी करो टेस्ट सीरीज तापरे स्टार्ट हबो so that you will be highly prepared to attempt test series. Yes, Lopamudra, good evening, है ना? So are you giving questions or not? Right? Question एबे जहाँ सब YouTube classes पढ़ाई ची plus paid batches रे जहाँ सब जाई ची start माने solving prelims questions. Okay? कहला एबेटू करिवो then you will be acquainted to the questions plus मु जहाँ भी दउची या सर माने जहाँ भी दउचंती करो हला एटी क्वेश्चंस लेवल बहुत भलो अछि मैं YouTube रे you will get fine questions बुझि पारछो anyways I will start with my ritual ठीक अछि so this is the trust batch is going on है ना trust batch is going on this is around 12k rupees and this is highly reasonable नंबर अच्छी जल्दी नहीं जो प्री प्लस मेंस है ना मेंस रे में वी विल देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू मेंस रे किसी कंटेंट आनी व्हिच इज विल बी हाईली सरप्राइज फॉर यू गाइस ठीक अछि तापरे अधिकारी बैच इज गोइंग ऑन प्रीलिम्स बैच दिस इज 6k and this is also affordable नंबर अच्छी नियो then I think you should go for it okay करे को पड़े यार है ना why I am using pink तापरे crash course on OPS are optional if you want तुम यदि ऑप्शनल नबो चाहो PSR if you are not यदि fill up करनो if you want to have it then this is it I'm already taken many classes few people have joined if you want then come ठीक अछि तबरे ठीक अछि you see the subject here कोन लिखा अछि India's oil imports from Russia hit 38-month low है ना almost 3 years plus 2 months है ना ठीक अछि India's oil imports from Russia hit 38-month low. Russia's share in India's crude oil import dropped to 25% in December from 34% in previous month. US president has claimed that India will stop Russian oil imports in exchange for lower tariff. Actually, US president जो claim करची India will stop importing Russian oil सेटा हबाक जाउनी because we are importing oil from
अराउंड 40 टॉप कंट्रीज ठीक अच्छे 40 कंट्री आम ऑयल आणुछु आउ गोटे मझे तुम शुणी थब कैरोलिना जो प्रेस सेक्रेटरी थिला सी कहूला कि इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड $500 बिलियन कंट्री रे सेडा भी भूल $500 बिलियन घर कहीं इन्वेस्ट करिया वी विल इन्वेस्ट इन आवर कंट्री राइट might be $500 billion trade है पर within the next 10 years okay 10 years या 5 to 6 years ପାଇଁ 500 billion trade टा करिवार अछि ओके ठीक अछि तो एक्चुअली कोन अछि देखो मु एडी गोटे जिंस तुम देखा जाउछ ना तुम देखो एडी गोटे देखो ना रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया बाय ऑयल प्रोडक्ट केते एटा देखो एटा कोन देछि 26 जुलाई टू 2025 ठीक अछि एटा देखो आमे आगुरु आगुरु even though we are friends with Russia ना वीडियो लैग होची कि वीडियो लैग होची कि वीडियो इज लैगिंग 1 मिनट now everything is visible right ठीक है सर लैग हमें नेटवर्क चेंज करने चेष्टा करछु जस्ट वेट नेटवर्क आई मीन वी आर स्विचिंग ऑफ टू द डिफरेंट नेटवर्क बहुत वाइट इन पेड क्लास रे एमिति होची प्रॉब्लम अछि ओके ऑलरेडी कहि छु चेंज करिया पे यस दिस अ प्रॉब्लम टेक टीम को कहि छु एबे एबे ठीक अछि या लैग होची एबे भी लैग होची व्हाट टाइम just wait a minute you just take a setting chalchi I hope it will work out होची वीडियो बहुत लैग होची ना आई मीन सकाळ प्रॉब्लम हेतला जदी मन ठीक करिया कथा केमदी मन ठीक होनी नॉट राइट really I know this is not right uh, just wait एबे लैग होची can you respond एबे लैग होची कि 5 PM क्लास ठीक एबे is this lagging right now okay is now lagging ठीक ଅଛି एबे होची और तो लैग होची यस नो प्रॉब्लम रोशंस लैग होची टाइम लागिबो तुम को
Okay, now it is clear. Is it clear? Okay, is it clear right now? Please, if anybody is there, then can clear it. Okay. I know we lost some time. How the issue has been resolved. चलता हाँ 2:30 PM रे स्मूथली चलता यस तो किसी प्रॉब्लम ही नथला आज एयरटेल फुडी पे लोडिंग हेतला तो I didn't expect this will happen here ना मुझे honestly I was thinking I was very lucky but जी मो संगरे भी हेगला so anyways right so can you see this PDF yeah? So everybody come back है ना now issue has been resolved एबे ठीक अछि आउ net lag करिवनी the first 15 minutes have been wasted successfully तो बाकी जो आधा घंटा अछि I will try to do maximum coverage. Okay. See this. See this. ମୁଁ ଟିକେ geopolitical context रे कहूछ ହେଲା. You can see this right. See this. एडा हमर Russian oil exports to India by oil product Jan 2016 to July 2015. ठीक अछि. तमे देखो हमर India Russia we are always friend. ठीक अछि. हमर Russia संगे किछ बैर नै. So we are good friends of Russia. Problem कोन देखो. This is एडा हला January 2022 हला एडा inflection point of inflection कोन देखला. ठीक अछि. ता पूर्व देखो January 2022 या देखो war केबे हेतला. war हेतला February मास रे हेतला February 24 2022 रे war हेतला देखो किंतु ता पूर्वरु रशियन ऑयल आई मीन ऑलमोस्ट नील थिला आमे किनुथले केते वी वर बाइंग रशियन ऑयल ऑलमोस्ट नील थिला बट February 24 war hela we got massive discount है ना massive discount then we started purchasing this crude oil eta kete just this you see this माने skyscrapers huge skyscrapers ठीक अछि आ गोटे जिंस कहूची एबे January 2025 actually कोन आमे 1.5 million barrels 1.5 million barrels per day आमे रशिया रु इंपोर्ट करछु ठीक अछि देखो गोटे जिंस लागी काली के जदि वॉर खत्म हे जिवो है ना काली के जदि वॉर खत्म हे जिवो तापर कोन होबो जानछो if the war will end somebody after 1 year तापर कोन होबो we will come back to this era Russian is our friends war खत्म होला पर तुमको रशिया काहे डिस्काउंट दबो ये तुमको डिस्काउंट काहे दबो सीधा then he will be have many buyers right ता पाखर त आउरी buyers पळे आसीबे ये तुमको डिस्काउंट काहे दबो war खत्म होला पर तो now India is what doing that सी strategically जोड तको तेलो किडिबार अछि सीतार किडुचे देखो प्रॉब्लम हला हमें ईरान संगरे किनि पारिबुनु हला वेनेजुएला संगे लिमिटेड अछि है ना रशिया को से मना कर देला ठीक अछि ताले आमे किनिबु काठू आ गोटे कथा कहूछ देखो एटा देखो एटा थिला मझिरे केबे सेप्टेम्बर मासरे न्यूज़ थिला India won't be bullied by Trump. Dowell told Rubio government was willing to wait out US president's term, says report. देखो अजीत डोवल went to US तांको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अछि या तांको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अछि मार्क रूबियो हला से तांको से या कहितले कि if Donald Trump is not toning down his rhetoric then आमे भी किछि आइस ब्रेकर मोमेंट आसीबो नाही so we were wait and watch moment कहीं गलो आमे चाहूतलु कि डोनाल्ड ट्रम्प रे तार टेन्यूर खत्म हैला परे आमे नेक्स्ट प्रेसिडेंट संगे रे आमे डील कर पारिबो बट
जदि तुम जो पब्लिकली जो कहूछ इंडिया रो डेड इकोनॉमी अछि, इंडियन इकोनॉमी इज फॉलिंग डाउन, देन वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट रेटोरिक. तो एठी कोन थला, according to Rupert Bloomberg, National Security Advisor had a meeting with the US Secretary of State Marco Rubio in September last year, told him that India won't be bullied by Trump or his top aides. तापरे September 16 रे कार बर्थडे, नरेंद्र मोदी रो बर्थडे थला, सेतोळ कोन हितला, Trump called Modi and wished him the happy birthday, right? सेतोळ कोन टिके रेटोरिक कम, माने सेतोळ जो टेंशन थला टिके कम होतला, टिके आइस ब्रेकिंग मोमेंट थला. किंतु जेतोळ ट्रेड डील ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ला साइन हेतला, Trump was not signing the deal. काहे मोदी फोन करी कहबो, but that didn't happen. But and मु ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देछि माने केमिति डील हेछि लास्ट क्लास रे. एटी देखो हैला, एटी कोन एबे कोन हेछि, द वैल्यू ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया फेल टू 38 month low of 2.7 billion in December 2025. ठीक अछि, 30 बट ऑलमोस्ट 3 इयर्स लानी हमें एबे इंपोर्ट कम हे जाछि, विथ रशियन ऑयल मेकिंग अप लेस देन ए क्वार्टर ऑफ इंडियाज इंपोर्ट. गोटे कथा कहबी, जदि हमर हमर कोन ऑयल सिक्योरिटी दरकार, एनर्जी सिक्योरिटी दरकार, जदि हमर इंपोर्ट बेसी होछि, व्हाट वी कैन डू हैना. एबे हमर कोन जाछि, बायोफ्यूल चलछि, बायोफ्यूल हैना, एथेनॉल ब्लेंडिंग हैना, केते 20%. मझिरे एथेनॉल ब्लेंडिंग रे प्रॉब्लम हेतला, 20% कहीं इंजन काम करने ठीक ठाक रे, बट दैट इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट. ठीक अछि. तापरे हमें कोन इलेक्ट्रिक गाड़ी पाखु जेबु, इलेक्ट्रिक गाड़ी खाबु जीवार अछि जे, बट हमको आसीबो लिथियम कोड आसीबो, लिथियम प्रोसेस कोड होछि चाइना रो होछि, मैक्सिमम लिथियम प्रोसेस चाइना रो होछि. तो दिस इज आल्सो ए बिग थ्रेट. बुझि पाछो, मैक्सिमम लिथियम जो बैटरी जो प्रोसेसिंग होछि, इट इज डन एट चाइना. तो इट्स ए बिग थ्रेट. बुझि पाछो. तापरे आ कोन अछि, एटा देखो, देखो देखो एडा एडा गोटे रोड मैप हैला, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2000 माने 2025 सुधा हमको 20% करबा कथा, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट. तापरे E100 पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल बाय 2021, एटा तो हेकलन नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स हैला. ता भीतर कोन अछि, शुगर मोलासेस, राइट, शुगर मोलासेस, शुगर केन, मेज, ए सब कोन होछि, ए सब ब्लेंडिंग होछि कोथरे, ऑयल रे ब्लेंडिंग होछि, राइट. So now we are moving on to that energy security कोडा हमें blending करछु, blending technique use करछु कोथरे, so that हमर oil ऊपर dependency कम रहबो. ठीक अछि. आ गोटे कथा कुछ एटा देखो, ठीक अछि. तमे ए क्वेश्चन टा करि परिबो कि, ए क्वेश्चन टा करले मो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द कांसेप्ट, मु कांसेप्ट कथा को जिबि हैला. ए क्वेश्चन टा करो, एटा सल यूपीएससी 2011 रास्तल ए क्वेश्चन टा. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन in the context of global oil prices. आज तो बेसी देखो, today we have lot of disturbances, so I know the already I mean class रो टिके load down tone down हे जाय छै, but still किछि questions करिबा so that class रो productivity maintain रहइबो. ठीक अछि. try to do this question. मु आज तुमको crude oil बिषय बुझेबी. ठीक अछि. in the context of global oil prices, Brent crude oil is frequently referred in the news. What does the term imply? It is a major classification of crude oil. It is sourced from the North Sea. It does not contain sulfur. Our answer कौन होगा? Try to do this question. मैं already तुमको crude oil विषय पूछे. जी हाँ जी अच्छी. Try to do this, है ना? मैंने एक क्वेश्चन करना के Brent crude oil, West Texas Intermediate करना एटा. देखो, in the context of global oil prices, Brent crude oil is frequently referred to the news. What does this term imply? It's a major classification of crude oil. It is sourced from the Northern Sea and it does not contain sulfur. Our answer कौन होगा? देखो, हैला, देखो Brent, देखो crude oil रो measurement अछि हैला. Crude oil can be termed as गोटे हैला कोन Brent तापरे West Texas Intermediate, WTI कोन West Texas Intermediate हैला. एटा मेनली यूएसए रो थाए, एटा नॉर्थ सी रो थाए हैला.
एटा देखो तो आर आंसर कौन अच्छे इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल दिस इज राइट है ना इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल इट इज सोर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न सी दिस इज आल्सो राइट इट डस नॉट कंटेन सल्फर दिस इज रॉन्ग सबु क्रूड ऑयल रे सल्फर इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट देख हम गोटे जिंस कहूँ देख हमर क्रूड ऑयल केते अछि वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट गोटे अछि तापरे ब्रेंट अछि ठीक अछि एडाला मेजर क्लासिफिकेशन एडाला मेजर क्लासिफिकेशन आ गोटे देखो अपार्ट फ्रॉम द मेजर क्लासिफिकेशन हम पाखरे ना गल्फ रो क्रूड ऑयल अछि हला तापरे रशियन ऑयल अछि या ताको उराल ऑयल कोन ताको है ना तापरे ईरान रो अछि राइट तापरे वेनेजुएला रो अछि हला वेनेजुएला अछि मु तो मु टिके आज टिके डायनामिक्स बतेबी एक्चुअली कोन होछ देखो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट रे आ भितरे माने एटा कोन कोंदी एपीआई सुनिचो एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है एपीआई है अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ठीक अच्छे देखो डब्ल्यूटीआई एटा कौन दउची डब्ल्यूटीआई कौन आ भितरे हारारी 0.1 टू 0.2 सल्फर कंटेंट अच्छी है आ भितरे ब्रेंट रे अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 0.6 सल्फर कंटेंट अच्छी किंतु गल्फ रे अराउंड 0.8 अच्छी है रशिया रे अराउंड 2 सल्फर कंटेंट जहाँ भी यूनिट है पर ईरान रो मोर देन 2.5 एंड वेनेजुएला रो वेनेजुएला प्रॉब्लम कोन आछो वेनेजुएला रो प्रॉब्लम हैला तांको जो सल्फर कंटेंट इज मोर देन 5 बुझी पारछो दिस इज मोर देन 5 एंड आमे एक्चुअली कोन करछन छ सी व्हाट वी आर डूइंग देखो सपोज रशिया हमको क्रूड ऑयल देला केते क्रूड ऑयल देला 65 डॉलर देला प्रति बैरल देला बट ता ट्रांसपोर्टेशन रे प्रति डॉलर रे तुम भाभी दियो कि $3 खर्च होछ हैला $3 खर्च होछ तापरे इंश्योरेंस मिसी के $10 होछ हैला प्लस ए जो सल्फर कंटेंट जोटा अछि सल्फर ए जो रशिया रो जो सल्फर कंटेंट जोटा अछि ना 2 माने यूनिट 2 जो सल्फर कंटेंट अछि आको रिफाइन करिया पे ना बहुत खर्च हो जाए आको रिफाइन करिया पे बहुत खर्च है सपोज $5 लागिला पर बैरल तुम देखो 65 प्लस 3 प्लस 10 5 केते होछ अराउंड 75 80 माने जदि मु एटा टिके कमे देबी देखो एटा कमे एटा सपोज एटा मु $5 कर देली ट्रांसपोर्टेशन एते पड़िबोनी तो केते हो 60 70 $78 होची $78 होची राइट काहेकि आमर जो क्रूड ऑयल जो सल्फर कंटेंट थाए ताको रिफाइन करिया पे बहुत प्रॉब्लम हुए तो एबे कोन होची सल्फर कंटेंट को केमिति तमे बाहर करिवो विथ हाइड्रोजन बुझी पाछो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सल्फर H2S एटा गोटे वेस्ट हेक बाहर हैला तो एबे कोन कहउछंती हाइड्रोजन टा भी ग्रीन हाइड्रोजन होबा कथा बुझी पाछो या मैक्सिमम ब्लू हाइड्रोजन तो दिस इज हाउ यू कौन करियो तमे एक्चुअली माने यू रिमूव द सल्फर कंटेंट बट तमे देखो एटा देखो हमर जो वेस्टर्न टैक्सेस इंटरमीडिएट ना आर रिफाइनिंग रे बेसी खर्च नाही आर रिफाइनिंग रे बेसी खर्च नाही हार्डली $1 लागिवो प्रति बैरल रे आर प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च मोर देन $5 लागिवो एंड एमाने केते देबे $70 रे देबे प्रति बैरल बुझी पारछो हरारी सेही $80 पाखा कि रेट रहबो बुझी पारछो ब्रेंट क्रूड हैला सेया ब्रेंट क्रूड टा कोडी नॉर्दर्न सी रो आसे नॉर्थ सी कोडी यूएस यूके डेनमार्क तापरे हमर जहाँ भी अछि नॉर्वे सेठू हमर कोन आसे ब्रेंट क्रूड ऑयल आसे ठीक अछि ब्रेंट क्रूड ऑयल नॉर्दर्न सी रो आसे तुम एटा करो ट्राई टू डू दिस ठीक अछि एटा करो तुम एटा देखो ए जो क्लासिफिकेशन टा देखो तुम देखो एटा ला वेस्टर्न टैक्सेस इंटरमीडिएट आर एपीआई डेंसिटी ठीक अछि आर एपीआई डेंसिटी देखो इट इज हाई गोटे जिंस तुमको कहबार थिला गोटे जहार एपीआई डेंसिटी हाई रहिबो ना दैट क्रूड ऑयल इज लाइट ना दैट क्रूड ऑयल इज लाइट ता भितरे सल्फर कंटेंट बहुत कम थाए बुझी पारछो ओके बुझी पारछो जो क्रूड ऑयल रे एपीआई डेंसिटी मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंटेंसिटी आई गेस है ना
तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंटेंसिटी जहाँ भितर बेसी थाए तार माने कोन सल्फर कंटेंट बहुत लो थाए एंड दैट इज लाइटर इन डेंसिटी बुझी पारो सेटा अमेरिकन रो बेंचमार्क तापर आ गुटे देखो है ना ब्रेंट क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल ता देखो कोन है जी एपीआई डेंसिटी इज हाई बुझी पारो ता माने सल्फर कंटेंट इज लो रिफाइनिंग डिफिकल्टी लेवल बहुत कम थाए तार रिफाइनिंग इज वेरी इजीली हो जाए जेमिति वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट भी हो जाए किंतु आम जो दुबई जीव ना दुबई रो एपीआई डेंसिटी इज मिनिमम टिके मीडियम थाए तार सल्फर कंटेंट बेसी थाए एंड इट इज वेरी मॉडरेट एडा एशिया रे यूज होए तापर उरल रो जोटा कि रशियन ऑयल रो सल्फर डेंसिटी अराउंड 0.7 थाए सेते पई इट इज हार्डर टू रिफाइन बुझी पारो इट इज हार्डर टू रिफाइन रशियन क्रूड ऑयल जो दिन सैंक्शन हटि जीव ना इंडिया रो सेमिति भी रशिया रो तेल नवा टिके कमी जीव कहीं रिफाइनरी खर्च तार बेसी हाई सल्फर कंटेंट ता माने कोन हाइड्रोजन बहुत लागिवो वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तार अलग कॉस्ट थाए बुझी पारछो तो इंडिया पई सब बेले एडा बहुत भलो तापर ब्रेंट भलो बुझी पारछो वेनेजुएला इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल कहीं तार सल्फर कंटेंट इज मैक्सिमम दैट इज व्हाई वेनेजुएला इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल ए क्वेश्चन टा करो एटा करो विथ रेफरेंस टू एपीआई ग्रेविटी है ना हायर एपीआई ग्रेविटी इंडिकेट्स लाइटर क्रूड ऑयल विथ एपीआई जनरली लेस देन 10 will float on water एडा मु कहि देबी लाइट क्रूड ऑयल जनरली yields more petrol and diesel हाँ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यस सॉरी थैंक यू अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देखो एपीआई ऊपर क्वेश्चन आसीनी किंतु फ्यूचर रे एपीआई ऊपर क्वेश्चन आसी पारे आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग कहिलो काली जदि मु प्रेडिक्ट करिवि एपीआई ऊपर जदि क्वेश्चन आसी गला देन बल्ले बल्ले बुझी पारो जेते एपीआई भलो हबो सेते क्रूड ऑयल रो रिफाइनिंग प्रोसेस इजी हे जिवो बुझी पारो जेते एपीआई भलो हबो क्रूड ऑयल रो रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत कमी जिवो आई नो टुडे वी ऑल लॉस्ट इट आज रो क्लास इज एम्प्टी हे जाय फॉर द इनिशियल डिस्टर्बेंसेस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बुझी पारो try to do this question higher API gravity indicates lighter crude oil with API gravity less than 10 will float on water देखो आर कौन होगा आंसर तापर लाइट क्रूड generally yields more petrol and diesel try to do this question वन एंड थ्री हाँ मोर तो सेमिति क्लास हे ने आर आंसर कोन 1 and 3 होछ तो लेट मी सी ठीक अछि देखिया कोन होछ देखो देखो एडा देखो higher API gravity indicates lighter crude this is right crude oil with API gravity less than 10 will float on water and lighter crude oil generally yields more petrol and diesel this is wrong हला 3 टा actually wrong अछि हला 3 टा actually wrong अछि काहे कि जते हां light crude oil generally हां 3 टा actually 3 is right sorry 3 is right देखो देखो एडा पानी एडा पानी हला सपोज एडा जदि क्रूड ऑयल हेतो ना एडा सपोज एडा क्रूड ऑयल हेतो ना तो दिस इज गुड काहे कि आ भीतर सल्फर कंटेंट लेस थाए जदि क्रूड ऑयल पानी ऊपर भासीबो ता माने सल्फर कंटेंट इज वेरी लेस ठीक अछि तो लाइट क्रूड ऑयल जनरली yields more petrol and diesel this is right ठीक अछि क्रूड ऑयल with API gravity less than 10 will float on water this is wrong
एपीआई कंटेंट जेते बढ़िबो सेते कोन फ्लोट करिवो लेस जदि रहिबो देन इट विल माने माने एपीआई कंटेंट हाई थेले सल्फर कंटेंट लो थबो एंड ऑयल टा फ्लोट भासिबो वाटर रे भासिबो ठीक अछि टिके टेक्निकल क्वेश्चन अछि आई थॉट दैट गिविंग दिस क्वेश्चन काइंगला क्वेश्चन पचारि पारे है ना या से माने कोन थला अमेरिकन पेट्रोलियम से कह देबे एपीआई विषय क्वेश्चन कह देबे एपीआई ऊपर क्वेश्चन पचार देबे या तार फुल फॉर्म पचार देबे है ना अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देछि या दे देबे अमेरिकन पेट्रोल इंडिकेटर्स दे परिबो बुझी पाछ अमेरिकन पेट्रोल इंडिकेटर्स एमता क्वेश्चन भी दे पारे ठीक अछि या तो एटा टिके देखि दबो देखो एटा देखो हैला एपीआई ग्रेविटी कोन it tells us the density देछि higher API lighter oil lower API heavier oil light crude oil देखो API above 31 हैला that is very light जेमती West Texas Intermediate तापर हमर कोड एटा कोड अछि Brent crude oil this is the examples of light crude oil medium crude oil केते हमर दुबई वाला दुबई है ना तापर ईरान वाला मीडियम तापर हेवी कोड हबो वेनेजुएला तापर रशिया आंकर कोन सल्फर कंटेंट अधिका थाए सो रिफाइनिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा लगे बहुत एक्स्ट्रा लगे हैला बुझी पाछो तो ठीक अछि सो एपीआई ऊपर मु कहि देछि यू कैन टेक इट ठीक अछि एडा करो with reference to furnace oil consider the following statement हैला it is a product of oil refineries some industry use it to generate power its use causes sulfur emission into the environment एडा आसला 2020 रे फर्नेस ऑयल सेतल भी कोन क्रूड ऑयल क्रैश करथिला सेते पय ए क्वेश्चन टा दिया जाय छै ना विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखो जेतले जेतले क्रूड ऑयल को रिफाइन करिवो ना तार बाय प्रोडक्ट्स कोन भारिबो पेट्रोल भारि परिबो डीजल भारिबो राइट विथ रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज कोन भारे पेट्रोल भारे डीजल भारे तापरे बहुत सारे जिनस बारे गुड इवनिंग कौन हम इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी यस दिस इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी देन दिस इज देखो ऑयल कौन फर्नेस ऑयल एक्चुअली कौन आछ जेतलो क्रूड ऑयल रिफाइन हुए ना ता तळे जो जिनस रही जाए ता फर्नेस तळे जो जिनस रही जाए ना सेडिमेंटरी हे डिपॉजिट हे जाए ताको कोन दी फर्नेस ऑयल हैला आ ए जो ऑयल आगु कोन करिवो एडा पावर जनरेशन रे यूज हबो फॉर स्टीम बुझी पार आकु गरम करके स्टीम बाहर करी से टर्बाइन आगु को आउरी बुलेबे इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज यस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज एंड एटा कोडी तळे रहे ठीक अछि तापर सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर यस काहे कि तमे तमे किछि इंडस्ट्री डीजल यूज करंती पावर जनरेट करिया पई बुझी पार तो तार तुम फर्नेस ऑयल यूज करि परिबो बुझी पार यस its use causes sulfur emission into the environment yes बुझी पार जेहेतु एटा क्रूड ऑयल रे बाय प्रोडक्ट तो एटा सल्फर एमिशन करिवो ही करिवो ठीक अछि तो फर्नेस ऑयल टा मु बुझे देछि प्लीज ठीक अछि आउतरे देखि दबा हला फर्नेस ऑयल टा कोन इट कॉजेस सल्फर एमिशन टू इनटू द एनवायरनमेंट ओके ठीक अछि प्रॉब्लम से है ना जेतला फ्लोटा बिगड़ी जाए ना ये जो टेक्निकल इश्यू सकासे देन सेमिति भी माने टेक्निकल इश्यू है जो फ्लो बिगड़ी जीवो देन तमे कम पड़ेबो मो संग एटा प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट ईयर कम है बट आई डोंट लाइक सच प्रॉब्लम्स ठीक अछि तो एटा आज दिन हाइलाइट है एटा जे लेट जॉइन करछ प्लीज एटा देखि दबो ठीक अछि थैंक यू क्वेश्चन आसी पारिबो फ्रेम हे पारिबो तुम टेस्ट सीरीज रे भी एमता क्वेश्चन पके देबी डोंट वरी by product sir not a product of oil refinery it is a product of oil refinery Vivek yes the diesel is a product of oil refinery petrol is a product of oil refinery other things gems so furnace oil is also a product of oil refinery बुझी पाछ आर यूज हुए पावर जनरेशन रे यूज है तुम डीजल यूज करतो लक्षद्वीप रे कोन लक्षद्वीप रे आमे तो रहउतलु इलेक्ट्रिसिटी आसे कोडू डीजल रो आसे जो दिन डीजल जनरेटर बंद हे जीवो पूरा आइलैंड ही अंधकार हो जाए
यस रेसिडुअल प्रोडक्ट यस कहीं सेटा फर्नेस जो फर्नेस थाए ना ता तळे सेटा रही जाए ब्लैक ताको ब्लैक ऑयल कौन थी बॉटम बॉटम ऑयल कौन तक बॉटम ऑयल ठीक अछि यस देखो रेसिडुअल पे तो बॉटम ऑयल भी कौन थी ठीक अछि आजी आजी एंडिंग को मन अच्छे लास्ट दीटा क्वेश्चन जो रही जाइथिला सेटा मु सॉल्व करके छाड़ीबी बुझी पारछ दैट इज वेरी इंपोर्टेंट मु भूलिनी बट आई विल मेक श्योर दैट से दीटा प्रॉब्लम मु सॉल्व करबी ठीक अछि कौन देछि 120 मिलियन कमिटमेंट टू छाबार पोर्ट इन ईरान कंप्लीटली पेड बाय सेंटर इंडिया देखो एटा कोन छाबार पोर्ट थिला गवर्नमेंट ऑलरेडी कही 2014 रे हम साइन करथलु कोन चाबार पोर्ट को डेवलप करिया पई चाबार पोर्ट सब टर्मिनल ऑलरेडी डेवलप हो जाइए $120 मिलियन ऑलरेडी खर्च हो जाइए बुझी पार्छ $120 मिलियन ऑलमोस्ट 3 ରୁ 4,000 करोड़ ऑलरेडी आम खर्च कर सारी तो आउ खर्च करिवार किसी उद्देश्य नहीं प्रॉब्लम कौन अच्छे एबे जो चाबार पोर्ट अच्छी ना चाबार पोर्ट अच्छी ना आमको वेवर के एप्रिल एप्रिल 25 2026 टागे आमको चाबार पोर्ट रे वेवर मिल जाइए पर आम चाहूँ एटा एक्सटेंड करबे जेहेतु बे ट्रेड डील हो जाइए तो वी माइट एक्सटेंड इट है ना आम पुणी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कथा होगी पुणी ताको एक्सटेंड करार अच्छे सो चाबार पोर्ट इज वेरी इंपोर्टेंट कहीं इंपोर्टेंट मुझे देख कही दूसरी देखो देखो एक्चुअली एटा नवंबर 2021-25 रे न्यूज़ थिला एटे कोन थिला अफगानिस्तान वाज टू पुश चाबाहार सीकिंग लॉन्गर रिलीफ ऑन यूएस सैंक्शंस हैला देखो अफगानिस्तान रो स्टेबिलिटी पई चाबार इज वेरी इंपोर्टेंट एटा तुम जानि थाओ है ना तापर एटी देखो इंडिया अफगानिस्तान टू अपॉइंट ट्रेड अटैचेस ओपन फ्राइट कॉरिडोर्स अमाइड तालिबान पाकिस्तान टेंशंस ठीक अछि तांकर जो एक्टिंग कॉमर्स मिनिस्ट्री अलग आस्तला अजीजी से आस्तला केबे आस्तला नवंबर मासरे आस्तले से ए सब कथा कि जाइछन देखो गोटे जिंस अछि मु तुम गोटे जिंस कहबि जाउछि हैला गोटे जिंस देखो जो अजीजी अछि further pointed out that another era where India can look to expand its investments in energy sector. The potential for energy production in Afghanistan around 70,000 megawatts. माने एटा 70 gigawatt कथा कुछ एतिकी तो ओडिसा रे भी नहीं highlighting that current need in the country is around 10,000 megawatts माने 10 gigawatt हैला अफगानिस्तान रो current energy potential. We need investments हैला we need investment. I know 2 big Indian companies stopped their work. I invite them to back and restart their work in energy sector. बुझी पार्छ तब एटा देखो we are giving preferential tariffs on raw material and machinery both at 1% माने एटा तो ट्रेड डील हेगला ऑलमोस्ट हेगला if you are coming to Afghanistan you will see less competition if production increases by 20% we are increasing our support just see एटा तालिबान कोच एम द लैंग्वेज के भाबितलो कि तालिबान यूज करिवो ट्रेड डील 1% आई मीन रॉ मटेरियल दबो तुमको 1% माने कोन तमे इन्वेस्ट करो विदाउट एनी माने तुमको टैक्स रिलीफ दिया जिवो तुमको कोन एपीआई छूट दिया जिवो सब्सिडी दिया जिवो एटा तालिबान कोच तालिबान कहिबार कारण कोन आंचो तालिबान कहिबार कारण ले एटा देखो एटे देखो तो देखो आमे एठो इंडिया अछि वी नीड चाबार पोर्ट टू डेवलप एक्चुअली पाकिस्तान को ऑलरेडी कुहा जाइतला ठीक अछि एटलीस्ट हमको रूट एठु दो सो दैट वी कैन डेवलप अफगानिस्तान बट पाकिस्तान कोन कोइला आंचो जदि हमें ए जो ट्रांजिट रूट यूज करि था तो पाकिस्तान रो आइतर पाकिस्तान रो भी फायदा अछि कि एस्टिमेटेड होतला कि पाकिस्तान को $2 बिलियन रो खाली फायदा होबो काहे कि बसी के फायदा होई थांता $2 बिलियन जदि हमें एटिकार ट्रेड कॉरिडोर टा यूज करि थांतो $2 बिलियन बुझी पारछो माने फायदा खाली पाकिस्तान को बसिया हां तुम जाओ बस एतिका रोड तो अछि रोड भी बने देथांतो एटा सब कोहाइतला बट पाकिस्तान कोन कहला नाही हबार नाही ना तमर प्रॉफिट आम प्रॉफिट न हो बट तमर प्रॉफिट हवा दरकार नहीं माने कंट्री इज लाइक दैट बुझी पारछो तो ए ट्रेड रूट टा बंद हेगला ठीक अछि तमे भाबो जदि हमर जदि इफ वी गेट दिस चाबार पोर्ट डन है ना जदि हमें चाबार पोर्ट को ठीक ठाक कर दउ छला आई नो दिस इज द पार्ट ऑफ INSTC कॉरिडोर बट चाबार पोर्ट में ईरान भी जाई परिबो हमें सऊदी भी जाई परिबो हमें वेस्टर्न यूरोप भी जाई परिबो तापरे सेंट्रल एशिया को जाई हमें कोड जाई परिबो तापर आउट देखो एटा कोन
एटा कोन जहादेन पोर्ट हला इट इज द माने कोन ट्राई पॉइंट ऑफ ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एठी कोन अछि एठी रेल अछि भी एंड सड़क भी अछि एठी पुनी बुझिबा इट इज जरान्स अछि so these are the corridor which can boost Afghanistan's trade with India so that is why it is very important so that ebe jo chabar port अछि हमरो we don't want any sanctions तो ebe April 25 जाके sanctions माने sanctions favor अछि 25 पर we don't know April 25 2026 आउ 3 मास रहिला 2 मास रहिला तापरे हमें यूज करि परिबो चाबार पोर्ट यूज करि परिबो माने कोन बुझ एप्रिल जाके हमें चाबार पोर्ट यूज करि परिबो बट एप्रिल पर we don't know what is going to happen जदि ट्रम्प रे खाली मूड कहला नाही चाबार पोर्ट को डाउन कर दियो आ गोटे प्रॉब्लम कोन जानछो तमे जेसीपीओ सुनिछो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कोडा ईरान रो बुझि पाछो माने इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनरिचमेंट या सेंट्रीफ्यूगल कहि परियो माने आ भितरे जेसीपीओ और जेसीपीओ माने कोन इरा माने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से आसिकरे ईरान रो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक करथांता हला एतल जगह माने एडा ओबामा स्टार्ट करथला 2015 रे स्टार्ट करथला जेबदि ट्रम्प आसला 2016 रे जेसीपीओ को बंद कर देला तापर एबे जेसीपीओ इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन so nobody is going to check what is happening in JCPO so ट्रम्प कहूचे जदि जेसीपीओ रो डील जदि हे जिवो जदि ईरान तार न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करि दबो देन चाबार पोर्ट कैन बी फ्री बट ईरान तो करिवो ना ईरान कहीं करिवो कि so this corridor is very important जदि एमान जदि कहबे हां हमर जेसीपीओ लागि जिवो जेसीपीओ रे हम जदि सरेंडर कर दो दिस कॉरिडोर इज वेरी इंपोर्टेंट इट डिपेंड्स ऑन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी प्लस आम ईरान संगे ट्रेड करछु प्लस एटी केते खर्च होची $120 मिलियन रा खर्च हेई सारछि ठीक अछि $120 मिलियन रा खर्च हेई सारछि मीन दैट इज ह्यूज बुझि पाछो ए जिनसडा ठीक अछि देखो एटा हला छाबार पोर्ट एटा हम देखलो कोडी को हम एठी भी जाई परिबा एठी भी जाई परिबा एठी भी जाई परिबा सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट यार दिस इज गेटवे टू सेंट्रल एशिया बुझि पाछो एठी जिवो सब बड जाई परिबा तापर देखो एथर जो यूनियन बजट हेची हाउ मच एंड वाज गिवन टू व्हिच कंट्री हला एटा जानि थाओ सब बेले जानि थाओ भूटान इज द मैक्सिमम केते 2289 करोड़ हला मैक्सिमम के पाइछि 2289 करोड़ के पाइछि एड भूटान पाइछि ठीक अछि तापर नेपाल नेपाल केते तारो 100 करोड़ यू इंक्रीज अछि 800 करोड़ हमें अफगानिस्तान देखि दिबा अफगानिस्तान पाइछि 150 करोड़ तो एठी कोन हेछि एठी देखो चाबार पोर्ट को जीरो मिलछि काहे कि ऑलरेडी हमें एलोकेशन करि सारिछु ता पे ऑलरेडी वी हैव गिवन एनफ मनी मालदीव्स रा डाउन हे जायछि म्यांमार भी डाउन हे जायछि बांग्लादेश को तो कंगाल करि दैछु व्हाट इज दिस नेम माने बजट रुपा दिया होछि तो बांग्लादेश बजट हैज बीन कट डाउन टू 60 करोड़ लास्ट टाइम थिला 100 कोटी 120 करोड़ थिला एबे 60 करोड़ हे जायछि तो मैक्सिमम एलोकेशन इज फॉर द भूटान प्लीज रिमेंबर दिस हैला एग्जाम रे पचारि पारे which country has got the maximum share hla as an aid which was given by India so it is always Bhutan kete increase heichi 138 crore ro increment heichi please remember this ठीक अछि a question try to do this question kono consider the following statements regarding the Chabar port it is located on the Gulf of Oman it is closer to Indian territory than Gwadar port it serves as a military base for the Indian troops in Afghanistan okay what's his name useless account CFBR okay it is a part of the international north south transport corridor INSTC which of the how many of the statements are correct try to do this question consider the following statement regarding the Chabar port located on the Gulf of Oman closer to Indian territory than Gwadar port serves as a military base for the Indian troops in Afghanistan it is a part of the INSTC corridor how many of the statements are correct question एमती पचारिबे right how many of the statements are correct Chabar port is very important definitely is coming to the exam तमे ए क्वेश्चन ता तमे एग्जाम रे एक्सपेक्ट करि परिबो so start preparing this ports now it is located on the Gulf of Oman is it correct it is closer to Indian territory than Gwadar port
Tapare, do India has a military base? Last option not visible. All four, all four, all four. Last option is all four. It is a part of the International North-South Transport Corridor, INSTC. Either answer कौन होगा? All four. Okay, okay. Okay, try to do this question. Our answer कौन होगा? Yes. Just keep me posted, okay? ശരി ശരി ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ. Okay. Okay, B coach. B. Only two, na? Okay. Let me do this. It is located in the Gulf of Oman. This is correct. It is closer to Indian territory rather than Gwadar port. This is wrong. Hela. It serves as military base. No, it is also wrong. It is a part of INSTC. This is correct. Kahi? देखो देखो এটা देखो. Look at this. Actually, Gwadar port টা এটি হচ্ছে হেলা. This is Gwadar port. This is Chabar port. হেলা. এটি হচ্ছে. এইটা হলো Gulf of Oman. This is Gulf of Oman. And এটি আমি খালি ট্রেড পাই প্যাট করেছি, not for any security establishment. ঠিক আছে. So Gwadar port is nearer to India than Chabar port. This is Gulf of Oman. তারপরে আউটা কোন? It is a part of INSTC corridor. Yes, this is a part of INSTC corridor. କାହିଁକି? ଏମିତି ଯାଉଛି. Which এটা দেখো, which is India is one of the founding members of the INSTC corridor, a multi-modal transport corridor which will connect এটা এটা ବି क्वेश्चन ପଡିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି. Okay. So India to Central Asia to so this is one. ठीक है. This is Europe. This is one. Anyways, shall we stop now? मतलब shall we stop या we'll continue from the Tuesday? एमिति बेजी class already done नहीं गलानी. Shall we stop? मतलब लाउज किसी productive होने actually जी. मैंने due to that internet issues ना तो everything is problem. Okay. Before that, you try to do this question. Okay. A question is very important. Below are some of the regions frequently seen in the news. Match them with the reasons, and they are in the news. Okay. North Kivu and Ituri. It's a war between Armenia and Azerbaijan. Nagorno-Karabakh, insurgency in Mozambique. Kherson and Zaporizhia, dispute between Israel and Lebanon. ठीक है. Only two. मैंने कौन? How many of the above pairs are correctly matched? Only two लाଗୁଛି तुमको. Actually, none of none. North Kivu and Ituri is in central. It is in Congo actually. It is DRC, Democratic Republic Congo रे एड़ा region ଅଛି. Nagorno Karabakh is in a region in
So I will stop this session. Okay, आज सेमिति भी class खराब हो जाएगी तो ठीक ଅଛି. So we'll start from one. I hope so next time internet issue नथबो म already कहबी है ना तो ठीक अछि. So don't worry, next time internet issue हबनी. I'll make sure that the internet connections are will get done correct. ठीक अछि. आज भी मोर भी मूड भी नथिला पढ़िया. Okay, I will wind up the session. ठीक है.